Hi friends, how are you? I hope you are fine. Today we will learn about parts of speech in English grammar. आज हम parts of speech के बारे में बात करेंगे. इंग्लिश लैंग्वेज में parts of speech बुनियादी हैसियत रखते हैं. चलिए आज इसके बारे में एक बेहतरीन वीडियो देख लेते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनीशन क्या है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर? पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन विद इन ए सेंटेंस. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कैटेगरीज है जिसके बेस पे अल्फाज का काम किसी भी सेंटेंस में नुमाया होता है. इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड ग्रामर एंड लॉजिक ऑफ लैंग्वेज. इसके बगैर आप किसी भी ज़बान के लॉजिक को नहीं समझ सकते. किसी भी ज़बान को समझने के लिए उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत ज़रूरी है. In English language, there are 8 different parts of speech. Some may classify as 9, but we will stick to only 8 parts of speech in this video. Friends, first of all, we will talk about how many parts of speech are there in English and what are those parts of speech. First of all, there is noun. What is noun? Second is pronoun. Third is verb. And fourth is adverb. Fifth is adjective. And the sixth part of speech is preposition. Seventh is conjunction. And eighth part of speech is interjection. And now we will talk about each separately. अब हम एक एक को पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या मकसद हैं. आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे जिससे आपको इसकी बेहतर समझ आ जाएगी. नाउन क्या चीज़ है? नाउन्स आर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी. नाउन किसी भी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, किसी पर्सन का नाम या किसी आइडिया और किसी चीज़ की खासियत का नाम है. इट्स एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड ए सेंटेंस. ये फाइल या मफूल के काम करता है. For example number 1 is Pakistan is a beautiful country. यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो नाउन है. Nasir likes hot coffee. Nasir likes hot coffee. Nasir is noun in this sentence. Number 2 part of speech is pronoun. Pronoun takes the place of noun to simplify speech and writings. नाउन प्रोनाउन क्या चीज़ है? प्रोनाउन जगह लेता है नाउन की. किसी भी नाउन की जगह ले लेता है ताकि सिंप्लीफाई कर सके, उसको सादा कर सके पढ़ने को और लिखने को. नाउन प्रोनाउन फंक्शन इज सेम वे एज नाउन. नाउन की तरह ही काम करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन. Number 1, she is very smart girl. Here she is used as pronoun in the sentence. Number 2, who is ringing the bell? Who is pronoun in this sentence. Third part of speech is verb. Verb expresses an action or state of being. Verb क्या चीज़ है? Verb किसी भी काम को या किसी भी चीज़ की हालत को बयान करता है. Example of verb is she walks in garden. She walks in garden. Here, walks is a verb or that expresses the action. Number 2 example is they live in a hostel. Here, live shows the state of they. So therefore, live is a verb in this sentence. Number 4 part of speech is adverb. What is adverb? Adverb क्या है? Modify or describe a verb. Adverb modify or describe a verb, adjective or another adverb. ये उसको modify करता है या बयान करता है किसी भी verb को, adjective को और किसी भी दूसरे adverb को बयान या modify कर रहा होता है. Adverb provide information about time, place,
manner, cause, degree, etc. Example of adverb are: number one, she is quite in classroom. Here, quite is adverb. They number two, they happily departed after meeting. Yeah, they departed happily after meeting. Here, happily as adverb. Number third example of adverb is: this is very expensive watch. Here, expensive or very expensive is adverb. Now we will come to the fifth parts of speech, that is adjective. Adjective modify or describe a noun. Simply adjective किसी भी noun को describe कर रहा होता है या modify कर रहा होता है. The words ascribe is attribute to the noun being modified. एडजेक्टिव जो है वो अल्फाज हैं जो किसी भी नाउन के बारे में हम एट्रीब्यूट करते हैं और मॉडिफाइड करते हैं नाउन को. इसके एग्जांपल्स ये हैं कि ये जो है किसी भी नाउन की क्वालिटी को बयान कर रहा होता है. एडजेक्टिव्स आर सिंपली मॉडिफाई और डिस्क्राइब्स qualities of a noun. Examples of adjectives are: number one, she wore a beautiful dress. Here, beautiful modify or describe the dress of she, so the beautiful is adjective in this sentence. Number two, it is a long drive to Karachi. Here long describe the drive to Karachi. Karachi is a noun, so it is a adjective. Long is an adjective in this sentence. Number third example is: the sky is blue. So the sky has been modified by blue, so sky is a noun and blue describes or modify the sky. So here blue is adjective. Now we will come towards the number sixth parts of speech today, preposition. Number sixth part of speech here is preposition. Preposition क्या चीज़ है? Prepositions are used to indicate a spatial relationship between nouns and pronouns. ये relationship को बयान करता है, relationship को indicate करता है किसी भी noun और किसी भी pronoun के दरमियान जो relationship है उसको modify करने के लिए preposition इस्तेमाल होती है. How one noun or a phrase or a pronoun relates to another. यहाँ पर किस तरह से एक noun एक जुमला और एक प्रोनाउन जो है वो किस तरह रिलेट करता है एक दूसरे के साथ. एग्जाम्पल्स ऑफ prepositions are: trust is important between me and you. Here between is preposition which describes a relationship between me and you. The milk is number second example is: the milk is in the refrigerator. Here in is preposition which relates the milk to refrigerator. He goes to, number third example is: he goes to school. It is very simple sentence. Here to is preposition. We describe his relations to school. Now we will come towards the seventh part of speech, which is interjection. Interjection use is exclamations to show feeling or emotions, or here we will say that strong emotions. Interjection shows the feelings or strong emotions. Interjection किसी भी जुमले में उसके एहसासात को या बहुत ही ज़्यादा इमोशन जज्बात को शो करता है. Example number 8. Number one example of interjection is: my coffee spilled on the floor. Oops. Here oops represents the interjection or the feeling upon which the coffee has been spilled on the floor. So it shows the feeling or strong emotions. Bha, who cares your opinion. यहाँ पर भा जो है वो
एज आ इंटरजेक्शन यूज़ हुआ है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज यूज़ हो सकते हैं जो किसी भी हद दर्जे वाले इमोशंस या फीलिंग्स को शो करते हैं। नंबर 8 एंड द लास्ट parts of speech is conjunction. Conjunction is used to connect words, phrases and clauses. Conjunctions जो है ये दरमियान में कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को, अल्फाज को, phrases को और clauses को। To coordinate the words together to make a cohesive sentence. किसी भी सेंटेंस को cohesive बनाने के लिए हम conjunctions का इस्तेमाल करते हैं जो अल्फाज को, phrases को, clauses को आपस में जोड़ के रखता है। Examples of conjunctions are: number 1, you need to study hard if you want to pass. Here if is example of conjunction. Number 2nd example is let's go to market and buy clothes. Here and is conjunction in this sentence. Number 3rd example is she is smarter, therefore we will hire her. Here therefore shows the conjunction in the sentence. It was all about parts of speech. I hope you have learned something from this video and you will come back. मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच for giving time and watching this video. Thank you so much.